Okay. So we are beginning. Very good morning. It's sharp 11. Today we are going to do one last topic which was actually left, that is regression. Now, what is regression? Let's first understand what does it mean. And I believe you must have done it, business statistics, you did it in the second semester. Am I right? Have you studied business statistics in the second semester, people? No reply. I think you have, and you should know what regression is. But anyway, since I'm starting the topic, what is regression is? Anyone can tell me what is regression? What do you mean by regression? Business stats pass kar liya. So regression is basically when we try to assess that is there an association between two variables. For example, we usually have one known as the independent variable and the other as the dependent variable. All of you know that usually we have X variable and Y variable. Is my screen visible to you? Can you see it, all of you? Please reply, I cannot hear you. Yes or no? Is the screen visible? Yeah. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Right. So yes हो गया. Regression का meaning पूछा तो कोई जवाब नहीं, हाँ? Okay. So guys, regression is we're trying to find out an association between, I said, two variables, so to say. For example, I hope you all know that the horizontal line is the x-axis. Am I right? Is this the x-axis or y-axis? X-axis, ma'am. X-axis. So x-axis is what? Independent variable or dependent variable? Anyone? X-axis is independent variable or dependent variable? नहीं पता? Okay, I'll explain. It is an independent variable. For example, यहाँ x पे हमें क्या दिया है? Years दिया है ना? 2000, 2002, 2004. और y पे हमें क्या दिया है? Output, which is the dependent variable. It is dependent on the y variable, that is the dependent variable is the variable which is dependent on the independent variable. अब जो independent variable है वो किसी पे dependent नहीं है, ठीक है? लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है. तो हम ये रिलेशनशिप देखते हैं क्या कोई एसोसिएशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, है कि नहीं है, ठीक है? So what we do is we usually make a regression line, and if you remember, this must have done by this end of second year. In fact, 12th में भी शायद किया हो आप लोगों ने. There is this trend line which is y is equal to a plus bx. अब b को हम इसमें small कर सकते हैं, ठीक है? तो y क्या है? जैसे कि ये दो चीजें दी है मुझे कि भाई ईयर 2002 में द आउटपुट वाज 69, ईयर 2003 में द आउटपुट वाज 78 एंड सो ऑन. ओके, सो जस्ट लाइक दिस इज x, years is x and output is y. Now the first thing you have to remember in regression is कि आपको ये determine करना है x क्या है और y क्या है. अगर आप उल्टा कर दोगे, x को y कर दोगे और y को x कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बताना चाहिए x वेरिएबल कौन सा है, y वेरिएबल कौन सा है, which is the dependent variable, which is the independent variable. Is it clear? Any question? Yes, ma'am. Raise your hand if you have a question. Okay. So now we move on. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा ये तो मैंने करा हुआ है, लेकिन I will show you how to do this question. Okay. So for example, you are given a question where you are given information like you're given the years and you are given the output. एक तो लोग अपने आईडी से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, एडमिट करना पड़ रहा है. या सो फॉर एग्जांपल लाइक आई सेड, इन्होंने हमें ईयर्स दिए हैं. इन्होंने बोला कि 2002, 2003. You can all just wait for 5 minutes, then I'll ask you to do it, and I will ask you to either share screen or send the picture of the question that you're doing. Okay, so be very careful. साथ के साथ करना है. How many of you have joined from the laptop? Please raise your hands. How many of you have joined from the laptop? Okay. So Asmita, Ashnur, make sure that laptop पे एक screen में तुमने Teams खोला हुआ है, ठीक है? जब मैं तुम्हें करने को बोलूंगी तो साइड में दूसरे स्क्रीन पे उसी लैपटॉप पे एक्सेल खोल के साथ में करोगे. क्लियर? और अगर आप लोगों ने बाकियों ने फोन से ज्वाइन किया है तो मेक श्योर दैट फोन को साइड में रख के आप लैपटॉप ऑन कीजिए और एक्सेल शीट ओपन कीजिए.
Clear? Because there's no point. It's not a theory class. You will have to do practically also. Okay, so let me first tell you, then you will start doing what you have to do. तो आपको information दी हुई है, कुछ years दिए हुए हैं और ये बताया हुआ कि किस year में कितना output है. So for example, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11. ठीक है. अच्छा, अब इसने दिया एक्चुअली 10 तक ही है, 11 का उसने हमें प्रिडिक्ट करने को बोला है, बट दैट्स ओके. तो उसने बोला कि 2002 में 69 था आउटपुट, 2003 में 78, then after that it was 79, then again 79, then 83, then 86, then 88, then 89, and then 90. Is it clear? Okay, so now it's your turn, guys. Make this table where you have to write the years and you have to write the output. The screen is in front of you. I give you 5 minutes to make this and then send the screenshot of what you have made. Banaiye. I'm waiting. Come on, fast. You can let me know when you're done. Hanji, ready? Guys, how many of you are done? Asmita, are you done? Manan, कर रहे हो नहीं कर रहे हो साथ में? पिक्चर भेजो. ऐसी शीट बन गई होनी चाहिए आपकी अभी तक. अभी तो ये क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. Yes, who is done? Ritika, Anisha, are you done? If you're done, send your Excel sheet picture, please. I'm waiting. Shall I go ahead? Aditya, Yes, ma'am. are you there? Anshika, are you doing it? Yes, ma'am. हो गया है. Chaliye. Okay, see guys. So this is the question. Okay, now what are you asked is, so it says, the question says, develop a spreadsheet to conduct the following trend series analysis by utilizing the standard technique of least square regression. So we are using regression. कई बार question में आपको हो सकता है regression भी ना बोला हो. ठीक है, तो आपको समझना होगा कि आपको regression लगाना बोला होगा, trend आपको line बनानी है. ठीक है. What shall be trend value of output for the year 2011? Prepare a suitable graph to depict actual and estimated output year-wise. Also find out coefficient of correlation between the years and output. So now I told you, आपको भी पता है, excuse me, know that y is equal to a plus bx. Now what is y here? ये आपका y है. अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से x कौन सा है और y कौन सा है. y is the dependent variable, so it's going to be output. आप यहाँ पे y लिख सकते हो. Years is the independent variable, hence it's going to be x. Now what is a? Anyone, what is a? A is the intercept. So now to calculate a, I will have to apply the intercept formula. पहली बात. दूसरी बात, what is b? अच्छा, और ये b small है. b is slope. So which means the two formulas that we will be applying are slope and intercept. I repeat, the two formulas that we will be applying, or the functions that we will be applying, are slope and intercept. Yeah, so who's going to answer? What are the two formulas, that functions that we are going to use? Slope and intercept. Slope and intercept. Okay, so let's see how are we going to apply it.
नाउ यहाँ पे ठीक है, अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए स्लोप और एक तो चाहिए इंटरसेप्ट, उसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकती. सो हियर आई राइट स्लोप and here I write intercept. ठीक है. Now see, here I have to apply slope function. So the moment I write slope, it gives me the function. Now देखो क्या लिखा है, known y's, known x's. अब known y's कौन से हैं? मुझे पता है ये y है, तो मैं इसको यहां से लेके यहां तक ट्रैक कर दूंगी. known y's है, इसलिए नीचे वाला नहीं किया, वो unknown है. ठीक है. So known y's, it's a known x's. So I go on known x's and then close the bracket and enter. This is my slope function. Do it. Everyone do it. Slope function आ जाए, फिर पिक्चर भेजो. मैं वेट करिए, नहीं तो मैं स्टॉप करके स्क्रीन शेयर भी करा सकती हूँ किसी की भी. कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए. स्लोप का भेजिए. Ready? How many of you have got the answer for slope and what is your answer? मैम Aditya प्लीज एक Chaudhary. बार स्क्रीन शेयर कीजिए ना. हाँ प्रेम, just hold on. Can you see it? There's a bit of disturbance here. Some construction is going on. Yes. Hanji, who all have got the answer for slope? Aditya. Not there, huh? Vaibhav. Vaibhav, you got the answer? Yes, ma'am. Mohit, you have got the answer? Yes, ma'am. Can you send a picture in the chat box? If anybody can send a picture in the chat box, I'll be appreciating that. Please send it. Aryan, please send. Okay, so the first part was हमने x देखा क्या है हमारा, y क्या है. Then we know that the formula that we are going to use is y is equal to a plus bx. So therefore there are the two functions that we have to apply, slope and intercept. The first one we have already applied, that is slope. The second one is going to be intercept. Now let's see what is intercept. So if I apply the intercept, it asks me known y's. So again I put the known y's and then I put the known x. Close the bracket, and this is the intercept I get. Yes, come on guys, please do the intercept also. And Done, send ma'am. me a picture once you're done. Picture किसी की नहीं आई है मुझे. How do I know you're done? Huh? Divyansh, you want to ask मैम something ग्रुप or पे you भेज got दिया it? ये कंप्यूटर पे पिक्चर जा नहीं रही थी, ग्रुप पे भेज दी. Okay बेटा. Fine, got it. अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी जो तुमने गड़बड़ की है, let me tell you. Hold on, हाँ, I'll tell you. देखो, slope क्या आया बेटा वैल्यू आपका, जरा बताओ मुझे एक बार, बोल के बताओ. नहीं मैम, वो बस लिखा है स्लोप. मेरा स्लोप 2.366 ही है वो. हाँ और वो हाँ, तो ये ध्यान, वो वाला वो है इंटरसेक्ट. इंटरसेप्ट. मैं वही समझा रही हूँ, जब पेपर में करोगे तो स्लोप के सामने तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला लगा होना चाहिए, नीचे इंटरसेप्ट होगा उसके सामने इंटरसेप्ट, क्योंकि अगर ऐसे भेज दोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे यहीं पे. ठीक है. नहीं, वो मैं ट्राई कर रहा था तो हाँ थोड़ा वैसे लिख दिया. हाँ हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना. तो तभी मैं पिक्चर मांग रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके सामने नहीं हूँ, जब तक आप पिक्चर नहीं भेजोगे मैं बता नहीं सकती आप सही कर रहे हो कि गलत. ठीक है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. तो दोनों चीजें तो अब उसने बोला था कि भाई हमें प्रोजेक्टेड वैल्यू निकालनी है. ठीक है. इसके बेसिस पे जस्ट लेट मी रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू वंस. Develop a spreadsheet to conduct the following trend series analysis by utilizing the standard techniques of least square regression. What shall be the trend value of output for the year 2011? अब 2011 की वैल्यू तो आप निकालोगे जब यहाँ पे आप प्रोजेक्टेड वैल्यू सबकी निकालोगे. कैसे निकालोगे? Let's see that.
So projected value. And now I know that here I have to apply what this. ये वाला जो फॉर्मूला है मुझको ये यहाँ अप्लाई करना है, दैट इज a प्लस बी एक्स, और फिर उसी को ड्रैग कर दे। अब हमें स्लोप पता है, सब जगह सेम यूज होनी है। वी नो द इंटरसेप्ट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम, सो व्हिच मींस वी हैव टू डू एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नाउ व्हाट इज इट? a प्लस a क्या है गाइस? a क्या है? a इज द intercept. To tell you, I mean, let me just tell you here first. This is intercept. ये है intercept, ये होता है, ठीक है? और slope is b. So which means now if I have to apply this, I will do equal to a. That is, in इसको मुझे absolute referencing देनी है. So I'll give it absolute referencing like this. डॉलर ऐड करूंगी साइन, ठीक है कि नहीं? बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. एनी डाउट? ठीक है ना? कोई डाउट हो तो बताना बीच में। बी, बी क्या है? बी ये है स्लोप। अगेन इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी, सो आई ऐड द डॉलर साइन एंड उसके मल्टीप्लाइड बाय मुझे एक्स करना पड़ेगा। अब इस केस में मुझे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक में एक्स अलग अलग होगा, ठीक है? इसका आंसर देखते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? ये गलत है। अब बताओ क्यों, क्या गलती करी? बोलो। एक्स ईयर्स होंगे। हाँ करेक्ट। हमने क्या किया था? देखो, ए है मेरे पास, इंटरसेप्ट दैट इज दिस, ये है मेरा इंटरसेप्ट, राइट? फिर मैंने डाला बी which is this, into x. Yes guys, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं? कोई बता रहा है मुझे? What should I multiply here? I want an answer. Ma'am, B3. एक लड़की बोल चुकी है अभी। यहाँ पे मल्टीप्लाई x क्या है इस केस में? बताइए, anyone? What is x in this case? Nobody? ऊपर लिखा भी हुआ है x कहाँ है, तब भी नहीं पता चल रहा। हाँ हाँ बोलो, फिर से Year बोलो बेटा। 2011. 2011. 2002, no, 2002। Sorry. हम ऊपर से कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा. ये देखो, ठीक है? हम सबका निकालेंगे ना प्रोजेक्टेड वैल्यू, उसी के थ्रू फिर हम 2011 पे पहुंचेंगे। यूज करके दिखाना है ना ट्रेंड क्या है, ठीक है? अब बहुत सिंपल है, एक बार मैंने फॉर्मूला लगा लिया तो मुझे तो बस यहाँ से इसको खींचना है। ये लो आ गया। अब मेरे पास 2011 की वैल्यू भी आ गई कि भाई 2011 में इतनी वैल्यू होगी। ओके, नाउ आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, प्लीज डू इट योरसेल्फ एंड देन सेंड द पिक्चर ऑफ द फाइनल थिंग। इसके बाद थोड़ा सा और है, अभी पहले इसको कंप्लीट कीजिए। यस, डू दिस मच गाइस। आई एम वेटिंग। अरे नहीं, मेरी स्क्रीन की फोटो खींच के नहीं भेज दी तुमने? डाउट हो रहा है मुझे। स्क्रीन की फोटो खींच के भेज रहे हैं ऐसा लग रहा है। No, ma'am. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर तो आपने देना है 13 दिसंबर को। आई डोंट माइंड, इट्स टोटली अप टू यू। ये खुद ही किया है, खुद ही किया है। उसमें मैम अच्छी वैल्यूज बात भी है, आप देख सकती हैं, आपके डिजिट से कोई आता है। बात नहीं, कोई बात नहीं। आए, अब जिसको इशारा है वो समझ गया होगा ना, जिसको मैं बोल रही हूँ वो समझ गया। सो डोंट वरी, जिसने खुद किया उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में भी कर लेगा, ठीक है? आगे चले, इतना हो गया गाइस कि नहीं? प्लीज लेट मी नो, शैल आई वेट? Shall I wait or go ahead? Let me know, I'm waiting.
इसको थोड़ा सा आप ब्यूटिफाई कर सकते हो ऑल बॉर्डर्स से. Raise your hands, whoever is done, and I can go ahead. Just raise your hands. अगर आप लोगों का हो गया. Still people are doing, I think. Okay. Right. So I can go ahead, right? I think most of you are done. Arshnu, shall I go ahead or shall I wait for you? Parth, Prem. मैम प्लीज वेट. Yeah, okay. No problem. Just let me know. तभी मैं बोलूं, जब तक आप बोलोगे नहीं wait तो मुझे पता नहीं चलेगा. I'm waiting. Can I go ahead? Let me know. I'm waiting. Yes, ma'am. Okay. So this is done. हमें 2011 की वैल्यू भी मिल गई. इसको आप थोड़ा अगर करना चाहो तो फिल भी कर सकते हो, so that मतलब this is the answer करके. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछी है? Let's see. Hold on, हाँ. What should be the 10 value हो गया. Prepare. और पूछे correlation between years and output. So we will have to apply the correlation formula. So if I go here, correlation, this is equal to correlation. Just a minute. ठीक है. Array 1. अब यहाँ ध्यान रखना है. Array 1 is this. So this is array 1. Just a minute. And then array 2 is this. Sorry, just hold on. There's one mistake that we have done. अब क्योंकि array 1 में देखो हमें 2011 का वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ तक जाते हैं. ठीक है. And then array 2 में यहाँ तक. Right? So this is correlation. Apply correlation. Tell me what is your answer, guys. I'll just wait. हाँ जी, बताइए. करिए. Correlation, yeah. Some people have sent the answer. Others? Those of you who are done till here, please raise your hands again. Manan, are you done? Krishna? Ready, everybody, for the next step? Good. Easy है ना? देखो, easy तब तक रहेगा अगर आपको ये पता है x क्या है, y क्या है, array 1 क्या है, array 2 क्या है. अगर वहां confusion नहीं होगा तो you can easily do it. Otherwise, there will be a problem. ठीक है? That. Now, the other part of the question is, there is one more thing, the last thing that they have asked, which is very easy. They also say, prepare a suitable graph to depict actual and estimated output year-wise. So now we have to use a graph, okay? So what we'll do, हमें ये पूरी चीज है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो है. So we go insert, you know, there are things like graphs here.
we will do for this scatter plot. And ये जो smooth lines वाला है, third वाला, we can go on this one, scatter with smooth lines. Okay. The moment I click on it, मेरे पास अपने आप ग्राफ बन के आ जाएगा. अब बस मुझे इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है. ठीक है, करिए पहले. Make the scatter plot, send the picture, and I'll move ahead. I'm waiting till you're done. Ready? Can I go ahead? Some people have sent, I think. Yeah. मैम ये Okay. स्कैटर Now वाले see. का ऑप्शन क्या? नहीं आ रहा आपके पास? ऐसा तो नहीं होता. इंसर्ट पे ऑप्शन में जाओ, यहाँ देखो कॉलम होगा, लाइन होगा, पाई होगा, बार होगा. हाँ हाँ देखो. वो तो है. एक मिनट. हाँ हाँ मिल स्कैटर गया. मिला? मिल गया ना? थोड़ा आगे जाना था बस. ओके. नाउ अब इसको थोड़ा ऑब्वियसली इसके ऊपर हेडिंग वेडिंग डालने के लिए व्हाट डू वी डू? वी गो ऑन द लेआउट. ठीक है, द मोमेंट आई एंटर लेआउट, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गया चार्ट टाइटल का. तो मैंने चार्ट टाइटल डाला अबव चार्ट वाला, और यहाँ मुझे ऑप्शन आ गया. तो मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर रिग्रेशन. करिए, इतना करिए. फिर और बताती हूँ एक्सेस और वाई एक्सेस को वो करने के लिए. जी, रेडी? आगे चले. तो चार्ट टाइटल हो गया. अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नेम करना है. तो यहाँ पे आ रहा है आपका एक्सिस टाइटल्स, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल, टाइटल बिलो एक्सिस. ये आ गया यहाँ. तो ये है ईयर्स. सो आई मेंशन दैट ईयर्स. Then I can go here again on axis titles. This is vertical axis, rotated title. Here I can mention output, oblique, projected value. ठीक है, थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं ताकि क्लियरली दिखे. This also we can bold. That's it. Now see, this should be your final output. Do this and send me the final picture. इसको भी बोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया. Yeah, please send me the final picture, guys. आपका चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल्स and bold करके this will be the final figure. You can do other things also, like grid lines हटानी है उनको हटा सकते हो, रखनी है रख सकते हो, that's your choice. वो आप कितना भी कर सकते हो. But this is the final. Done, everyone? I'm just taking the attendance, also downloading it. हाँ जी, आई नहीं मेरे पास final picture. I think nobody has sent till now. Yeah, somebody has sent. Right, correct. ठीक है. Great. अब different, so this is like या तो आपको ऐसे दिया हो सकता है regression, ठीक है, या फिर usual types of question that you get. For example, they tell you that in the x-axis you take any value from 30 to 40. So you have to be careful कि 30 to 40 के value में ही आपको देना पड़ेगा 31, 32, 33 ऐसे करके. ठीक है, और y में भी let's say वो एक condition डाल देता है कि 800 से 900. So you put those. ठीक है, then you apply the slope and intercept, then you get the regression line, then you can finally take the correlation if the correlation has been asked and make a graph.
These are the basic kind of questions that you get in regression. It's very simple. मतलब बहुत simple है. Slope का function, intercept का function, then आपका regression line, projected values आ जाती हैं, correlation, and then the diagram. Is it clear? Any question in regression that you have? Any doubt? Yes. Okay, guys, now what I want you to do is if you could just take out the evaluation sheet that I sent you. आपको मैंने एक सेकंड मीडिया में जाओ अपने ग्रुप पे. I want to discuss that. Let me just stop recording first.